In this video, I am speaking about Sambar deer, the largest deer that occur in India. I will give information on regarding about its facts, its distribution and habitat, and behavior and ecology. Sambar is a large deer native to the Indian subcontinent, South China, and Southeast Asia. It has most recently been assessed for IUCN Red List in 2014 and listed as a vulnerable due to its population is have declined due to saber hunting, local insurgency, and exploitation of habitat. Sambar, or scientific name is the Rusa unicolor, and belong to the family Cervidae. It is a widely distributed deer of the family Cervidae and found from India and Nepal eastward through Southeast Asia. Sambar has many subspecies, but I will focus on important species. The nominate subspecies of the Sambar in India and Sri Lanka are the largest of the genus, with the largest antlers, both in size and body proportions. And the South China Sambar of the southern China and mainland Southeast Asia is probably the second in terms of the size, with slightly smaller antlers than the Indian side. Antlers means the horn-like and branched on the head of the deer. And the typical feature of this species of the Rusa, or generally males possess the horns, and they are in branch form, means antlers. And the Sumatran sambar that inhabits the Malay Peninsula and Sumatra, and the Borneo sambar seems to have the smallest antlers in proportion to their body size, and Formosan sambar is the smallest subspecies with the antler body proportions more similar to the South China sambars. So here I cover one is the first and foremost the India and Sri Lanka sambar species. Second one is the mainland southern China and Muchakar in the mainland Southeast Asia is the second in terms of the size with slightly smaller antlers than the Indian Sambar. And third one is the Sumatra Sambar that inhabits the Malay Peninsula and Sumatra. And fourth is the Borneo Sambar subspecies. And fifth one is the Formosan Sambar. Currently, 7 subspecies are recognized, although many species are proposed in this genus. And the appearance and size of the sambar vary widely across its range. I have already told the India and Sri Lanka, another is the Sumatra and Borneo, and their appearance and size of the body vary widely across its range, which has led to the considerable taxonomic confusion in the past. And Sambar attained a height of 102 to 160 centimeter at the shoulder, and may weigh as much as 546 kilogram, though more typically 100 to 350 kg average weight of the sambar. And head and body length varies from 1.62 to 2.7 meter,
with 22 to 35 centimeter long tail present in this sambar deer. And in a general, individuals belonging to the western subspecies tend to be longer than those from the east, and the females are smaller than the males. The general females sambar are smaller than the males, and among all living surveyed species, only the moose and elk can attain the larger sizes. And the brow lines being simple, and beams are forked, means regarding the antlers, the beams are forked at the tip, and so they have only three tins, and the antlers are typically up to 110 centimeter long in fully adult individuals, and up to 110 centimeter long in fully adult individuals. And as with the most deer, only the males have the antlers. Only males have antlers. The saggy coat can be saggy coat be from yellowish brown to dark gray in color of this sambar, and but some species have the chestnut marked on the rump and under parts of the body. And sambar have also a small but dense mane, which tend to be more prominent in males. The tail is relatively long for a deer and generally black ever with a whitish underside in color. And now I'll tell about the distribution and habitat. The sambar is distributed in much of the South Asia, as far as north as south-facing slopes of the Himalaya, in the Nepal, Bhutan, and India, and in mainland Southeast Asia, including the Myanmar, Thailand, Indochina, and the Malay Peninsula, Indonesia, Taiwan, South China, and including South China, including the Hainan. In the Himalaya, it occurs in the foothills, in the Himalayan foothills, Myanmar, Sri Lanka, and eastern Taiwan. It also ranges up to the 3,500 meter altitude, means 11,500 feet, and it inhabits tropical dry forests, tropical seasonal forests, subtropical mixed forests with stands of conifers and montane grasslands and montane broadleaf, deciduous and broadleaf evergreen trees to the tropical rainforest. It occurs up to the tropical rainfall, and the sambar prefers dense cover of the vegetation of the deciduous shrubs and grasses, mainly for riding, and especially for for its need of feeding. Sambar are nocturnal and crepuscular. Crepuscular, you means they are active in twilight, that is crepuscular, and the males live in alone, and for much of the year, and females live in small herds of up to 16 individuals. In some areas, the average herd consists of only 3 or 4 individuals, and they often congregate near water and near water sources, resources, and are good swimmers. They are also good swimmers, all sambars, and like most deer, sambar are quite
and although all adults can scream or make short, high-pitched sound when alarmed, means when conditions become fearful, and however they more communicate with other animals by scent marking and foot stamping. These are important features for their sighting in the forest or in their habitat. Sambar feed on wide variety of vegetation, including the grasses, foliage, browse, and fruits, and water plants. Depends on the much on the habitat, their habitat, where they occur, and they also consume varieties of the shrubs and trees also, and they are favorite. Sometimes they become the favorite prey of tigers and ascetic lions, and also taken by the crocodiles when they visit for drinking water near the rivers, and especially near the swamplands. They become a prey of the crocodiles. And sambar is introduced species in some countries to the various parts of the world, including Australia, New Zealand, and the United States. And recently, researchers have discovered a white subspecies in the Kaveri Wildlife Sanctuary of the sambar species. सांबर एक भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया का मूल निवासी एक बड़ा हिरण है। हाल ही में 2014 में जो है रेड लिस्ट में एक इसे कमज़ोर प्रजाति के रूप में सूचित किया गया है, क्योंकि गंभीर शिकार और स्थानीय विद्रोह और औद्योगिक मतलब जनसंख्या औद्योगिक विकास की मतलब उसके आवास का दोहन होने की वजह से उसकी जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई है। और जो है आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि सांबर का निकटतम जीवित रिश्तेदार जो है इंडोनेशिया का जाउन रूसा है, यानी इसकी सब स्पीशीज। यह उन रिपोर्टों से समर्थित है कि सांबर अभी भी इस प्रजाति के साथ एक उपजाऊ संकर पैदा करने के लिए प्रजनन कर सकता है। और इसके जीवाश्म मीन्स फॉसिल के अनुसार जो है इसे प्लेस्टोसिन से इसका जो है विकास मतलब उसका उद्भव माना जाता है कि प्लेस्टोसिन टाइम में इसका जो है प्रारंभिक विकास हुआ है। हालांकि प्लियोसीन की प्रारंभिक हिरण प्रजातियों के रूप में भी बहुत यह समान दिखता है, लेकिन आधुनिक ग्रवाशय गिरवा से कम समानता रखते हैं। यह प्रजाति संभवतः दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय इलाकों में भी उत्पन्न हुई और बाद में वर्तमान सीमा में फैल गई है। भारत और श्रीलंका में सांबर की नामांकित उपप्रजातियां जिनमें सबसे बड़ी हैं, साइज में सबसे बड़ी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, और जिनमें आकार और शरीर के अनुपात और दोनों में सबसे बड़े सींग हैं इसमें। और दक्षिणी चीन और मुख्य जो भूमि दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण चीन सांबर संभवतः आकार के मामले में दूसरे स्थान पे हैं, यानी कि चाइना वाला सांबर। और मलय प्रायद्वीप सुमात्रा में रहने वाले सांबर जो हैं सींग और उनके शरीर के अनुपात में सबसे छोटे लगते हैं। और फॉर्मोसन सांबर जो चौथी ऊपर जाति बताई है उसका सींग का अनुपात और शरीर के अनुपात दक्षिण चाइना के सांबर के समान है। तो वर्तमान में लगभग इसकी 7 उपप्रजातियाँ प्राप्त हैं। और भारत में जो मिलती है, भारत श्रीलंका ये सबसे बड़ी साइज में भी और उसके एंटलर्स के अनुसार जो है सबसे बड़ी प्रजाति है। और इसका जो है साइज़ 102 से 160 सेंटीमीटर तक की जो है ये ऊंचाई प्राप्त करते हैं और इनका वजन 546 किलोग्राम मैक्सिमम तक हो सकता है।
आमतौर पर ये 100 से 350 किलोग्राम तक होता है इसका शरीर का वजन। और शरीर की लंबाई 1.62 टू 2.7 मीटर है। और पूँछ 22 से 35 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और इसके उबड़ खापड़ सींग जो है आमतौर पर जो रसीले होते हैं, और यह सिर पर बीम के कांटेदार होते हैं। ये और एकदम से ये डाइकोटोमस, एकदम से ब्रांच टाइप के होते हैं। और इसमें जो है इसका शरीर का जो है रंग गहरे भूरे, पीले भूरे से लेकर गहरे भूरे तक ज़्यादा हो सकता है। और आमतौर पर रंग में एक समान होता है। इन कुछ प्रजातियों में दुम और नीचे के हिस्सों पर भी चेस्टनट के निशान होते हैं। और इसका जो है सांबर दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में, उत्तर में नेपाल, भूटान और भारत में हिमालय की दक्षिणमुखी ढलानों तथा बर्मा, थाईलैंड, इंडो चाइना सहित दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि में वितरित किया जाता है, मतलब मिलता है। और ताइवान दक्षिण, जिसमें यूनान भी शामिल है, और हिमालय की तलहटी और म्यांमार, श्रीलंका में यह लगभग 3500 मीटर तक जो है पाया जाता है। और यह उष्णकटिबंधीय शुष्क जंगलों, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जिनको बोलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय मौसमी सीजनल फॉरेस्ट होते हैं। और शंकुधारी, यानी कि कोनिफरस ट्रीज होते हैं, जो शंकुधारी पेड़ बड़े बड़े पाइन के। और पर्वतीय घास मैदान, जो कि पहाड़ों पे घास के मैदान मिलते हैं उसमें। और मिश्रण मीन सब ट्रॉपिकल मिक्स फॉरेस्ट में मिलता है, जो कि चौड़ी पत्ती वाले और या सदाबहार, उसमें भी एक पर्णपाती होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, और दूसरे सदाबहार जो एवरग्रीन होते हैं, उनमें यह मिलता है। और ये ज़्यादातर प्रेफर करता है कि जहाँ पे खूब घास हो, और जो है घास और घने आवरण, उसको पर्णपाती झाड़ियाँ और घास जहाँ पे खूब ये का आवरण हो, वहाँ पे ये ज़्यादा रहना पसंद करता है सांबर। और सांबर जो है रात्रिचर और संध्याकालीन दोनों होते हैं, यानी रात्रिचर मीन्स नॉक्टर्नल, और संध्याकालीन जो कि क्रेप्सकुलर, जो ट्विलाइट में ज़्यादा वो शिकार करता है, उसमें भी ये ज़्यादा मतलब उसमें भी जाता है। लेकिन ये तो खैर अपना भोजन के लिए जाता है। लेकिन इसका जो है अदर जो कार्निवोर एनिमल्स जो ट्विलाइट में ज़्यादा मिलते हैं, वो करते हैं अपना भोजन के लिए। तो ये तो हर्बीवोरस है मेनली। और इसमें जो है मादाएं, पुरुष जो है अकेले रहना पसंद करता है, अधिकांश समय अकेले रहते हैं। लेकिन मादाएं जो है लगभग 16 और ऐसे झुंड में रहते हैं, लगभग 16, जिसमें उसमें मादाएं होती हैं, उसमें एक साथ झुंड में, उसमें उनकी फैमिली के बच्चे भी होते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं। और अपरिपक्व मादा मतलब शामिल, जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। और इसमें जो है इसके पैरों पर जो है आमतौर पर खुशबू के निशान और पैरों के जो वहाँ पे प्रिंट्स होते हैं, तो वो उसके लिए जो एक तरह से खोजने के लिए जो है ये साइटिंग के लिए, एनिमल साइटिंग के लिए जो है एक जानवर कैसे, एक सांभर दूसरे सांभर को कैसे ढूंढेगा, तो वो फुटप्रिंट्स दे करके या तो उसके जो है खुशबू के अनुसार वो जो है उसको ढूंढता है। और हिरण जो है कभी जो है सिंह, यानी कि शेर के भी, और यह टाइगर के ज़्यादा ये शिकार बनता है। और कभी कभी जब पानी पीने के लिए जब ये जाता है ज़्यादातर पानी के स्थानों पे ज़्यादा है, यानी स्रोत जहाँ पे होते हैं वहाँ ये ज़्यादा इकट्ठा होता है। लेकिन वहाँ पे वो शिकार हो जाता है, क्रोकोडाइल्स भी इसको कभी अटैक कर देता है। और इसमें जो है इसके अलावा सांबर की कई प्रचलित प्रजाति के रूप में भी इनको सांबर को मतलब एक प्रचलित प्रजाति के रूप में भी अन्य राज्यों में, जैसे संयुक्त अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और सांबर जो है काफ़ी इसका जो लोग जो हैं कहीं कहीं पे भी जो है हमारे उत्तराखंड और हिमालय के वाले पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल और कश्मीर, इसका जो है सिंग जो होते हैं इसके, वो उनको लोग जो है घिस करके कुछ वाला लेप लगाते हैं सिर में भी, कि काफ़ी दवाई की तरह भी काम करता है ये। और एक ट्रॉफी की तरह भी लोग जो है पहले बहुत सा अपने घरों में रखते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको जो है इसकी पॉपुलर